हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, अस्सलाम वालेकुम। चलो, कल लाइट की वजह से आज भी लाइट नहीं है कोई खास, लेकिन चार्ज है इसमें। तो एनीवेज, सो देयरफॉर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम करते हैं काम चालू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 2 people in the waiting room. Just okay. हाँ, तो yesterday जो हम कर रहे थे उसी की तरफ वापस आते हैं। और जैसा कि हमने पहले किया था, if you have a polynomial p of z equal to should I write it directly? Okay, यहाँ पे हाँ, summation aj zj j runs from 0 to n. Okay. Okay. So which is the same thing as a n z raised power n plus a n minus 1 z raised power n minus 1 plus so on and so forth, a 1 z plus a naught. और अगर z1 और चूंकि हमें पता है इसके n zeros होंगे counting multiplicities, then there is a relationship between these coefficients. Relationship है in terms of what I call elementary symmetric polynomials. So sigma 1 of z1, z2 to zn, if z1, zn are the zeros of pz, are zeros of pz, then this is equal to summation zi, I runs from 1 to n, which is equal to minus an minus 1 divided by an. And similarly, if I take sigma 2, that is z1 of these n variables, the second elementary polynomial, it is I less than j, zi, zj, that's equal to, of course, an minus 2 divided by an, and so on and so forth. You could have sigma 3 of z1, z2, the third elementary symmetric polynomial, I less than j less than k, zi, zj. You take 3 at a time and multiply them and then add them. And this would be minus an minus 3 divided by an. And when I go to sigma n, you define it to be the product. Take all at a time. So that is product j runs from 1 to n, zj. And of course, it is equal to minus, last pe kya bacha? A0 by a. And I said that, or in general, you can write it in this form. Sigma n minus j of z1 up to zn is equal to minus 1 raised to power n minus j into aj by an, where j runs from 0 up to n. हाँ, यहाँ पे हमने sigma 0 को खुद से ही define कर दिया, just to make the picture complete. This is equal to 1. Okay, now you know this. और मैंने फिर उसी लेक्चर में कहा था, there is something called a fundamental theorem of symmetric polynomials, which says that every symmetric polynomial in n variables can be written as a polynomial in elementary symmetric polynomials. उसमें फिर मैंने कहा सबसे simple वाला जो which is not elementary symmetric polynomial but a symmetric polynomial, just a symmetric, if I take the sum of powers, say z1 raised power 5 plus z2 raised power 5, so we should be able to write it in terms of elementary symmetric polynomials. पहला वाला तो बड़ा easy है, अगर मैं 2 का लूं, you know that. You can always write this as in terms of elementary symmetric polynomials as z1 plus z2 ka square, of course, minus twice z1 z2, which is nothing but sigma 1 ka square minus twice
sigma 2 in case of two variables, right? So in general, we have a general formula that we can write any sum of powers, in fact any polynomial. उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन for this particular elementary symmetric polynomial, the sum of powers of the zeros of z, we have a method we can actually derive it, and that was what क्या था वो जो हमने कल शुरू किया था. It was Newton's method of finding the sums of powers of the zeros of a polynomial, because then you can write this in terms of coefficients, and sigma 1 would be, it would be what, minus a2 by a0, a2 by a1, make it minus a1 by a2, or of course here the minus a0 by a2. Then I can convert it into an expression in the coefficients using the previous relation. Okay, so let's start now with what we call Newton's method for finding powers, sums of powers rather, sum of powers of the zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. Okay, so as usual, let P of Z, मैं इसको ऐसे लिखूं, an cos z raised power n plus a raised power n minus 1, z raised power minus 1, plus so on and so forth. A1z plus a0 is my polynomial, and of degree n, that means an is not equal to 0, and let z1, z2, zn be its zeros, so that P of z can be written as an int product j runs from 1 to n, because इसके 0 है, so we can factorize it, which is the same thing as an into z minus z1 up to, now we take जिसको तुम कहते हो lower class में logarithmic polynomial, we just take log and then differentiate. So we take log, then you will get, using the properties of the logs, log of pz is equal to log of an plus log of z minus z1 plus so on and so forth, log of z minus zn. And if you differentiate, you will get pz, p dash z, sorry, divided by p of z. ये तो constant था, तो ये तो 0 आ जाएगा. इसका तो मिलेगा हमें minus. It will get an expression like this. That is p dash z then can be written as p of z था यहाँ पे, चलो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ. This would be 1 by z minus z1 plus 1 by z minus z2. Now this is a very important expression, which is, it is basically Lagrange's interpolation of pz in terms of zeros of p, of p dash z in terms of zeros of pz. But nevertheless, but I can also write it as p dash z is equal to p of z divided by z minus z1 plus p of z divided by z minus z2 plus so on and so forth, p of z divided by z minus z. Okay, now you have to remember this z minus z1 actually is a factor of p of z. Z minus z2 is a factor of p of z, because p of z is actually a n into z minus z1 है ना, into z minus z2 up to, मतलब ये सारे के सारे, मतलब यहाँ पे it is a polynomial of, it must be a polynomial of degree n minus 2, this must also be a polynomial of degree n minus 2, this must also be a polynomial of degree n minus 2. Okay, now what we do, we divide it. लेकिन हम अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा. लेकिन मैं p of z को लूंगा इस एक्सप्रेशन में, a n z raised power n plus, and I have what, a 0, इसको मैं डिवाइड करूंगा by z minus z1, and I would use something called synthetic division to evaluate this.
हैव यू हर्ड अबाउट दैट? तुमने किया है कहीं पे? मतलब हम तो करते थे लोअर क्लासेस में। अरे आवाज दो ना कोई। सिंथेटिक डिवीजन सुना है? Yes, और sir. डिवाइड हैव यू डिवाइडेड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर Yes, sir. पॉलिनोमियल? किया Yes, है? sir. वेरी Yes, sir. गुड, Yes, sir. वेरी गुड। तो तुमने किया है सिंथेटिक डिवीजन। तो हम ऐसा करते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल से थोड़ा उसको रिवाइज करता हूँ, फिर मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। सपोज आई टेक दिस एग्जांपल, p of z इज इक्वल टू, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ क्या मिलेगा हमें इन जनरल फॉर्म। सो p of z, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ट्वाइस z क्यूब minus 3 times z square minus 3 times z plus 2. Now p of 2 अगर मैं देखूं is 2 into 2 cube minus 3 into 2 square minus 3 into 2 plus 2. So this would be 2 8s are 16 minus, what is this, 3 4s are 12 minus 6 plus 2. This is equal to 0. So p of z should be equal to z minus 2 into some expression. ठीक है ना? And I want to find that q of z. The best way जब भी मैं linear से divide करूं, linear factor से, is through synthetic division. तो synthetic division में क्या होगा? I take this root, I just write the numbers, the coefficients, but in order. और यहाँ पे मैं लेता हूँ इस 2 को जो इसका 0 है, और यहाँ पे मैंने coefficients लिखे. It is a shorter version of the long division जो usually हम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ coefficients लिखता हूँ. 2 minus 3, फिर क्या है मेरे पास, minus 3 and 2. अगर मैंने ये coefficients लिखे, then what I do, I write 2 as it is here, then I multiply 2 this, and I write 2 to the 4 here, then I add, so you get 1, then I write 2 ones are 2 here, then I again add, I get minus 1, then I will get minus 2 here and 0. I will get 0 here because it is the 0. 2 vanishes, 2 say, that's why I get 0 here, and you will see it right now as a q. Then q of z must be, जो ये हमारा factor है, it is twice z square plus z minus 1. यानी ये मैं ढूंढ सकता हूँ, यानी मैं ढूंढ सकता हूँ p of z divided by जो z minus 2 का फैक्टर है, जो वो पॉलिनोमियल बचेगा, वो मैं सिंथेटिक डिवीजन से आराम से निकाल सकता हूँ. लेकिन मैं इसी को मैं रिप्लेस करूं बाय अ जनरल पॉलिनोमियल, तो मैं देखूंगा इसमें होता क्या है. Why should this be 0? है ना? Why should this always be 0 if it is a factor? So let's take a general 3-degree polynomial. मेरे कहने का मतलब है, suppose मेरे पास pz होता, that would be say a3 into z cube plus a2 into z square plus a1 into z plus a naught. ठीक है ना? Okay, अगर मैं suppose now p of z1 is 0, p of z1 है कोई इसका 0, यानी a cube into z1 cube plus a2 into z2 z1 square of course plus a1 into z1 plus a naught is equal to 0. ये इसका 0 है, तो applying synthetic division जैसा कि मैंने पहले किया था, z1 जो इसका 0 है मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने coefficients लिखे a3, then मैं लिखूंगा यहाँ a2, then मैं लिखूंगा यहाँ पे a1, then मैं लिखूंगा यहाँ पे a0. And using the same method जो मैंने पहले किया था, a3 को मैं as it is यहाँ लिखूंगा लीडिंग कोएफिशिएंट को, फिर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, so I will get here z1 a3, फिर मैं इसको ऐड करूंगा, यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, a2 plus z1 into a3, राइट? ओके, फिर मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ लिखूंगा, so it would be z1 into a2 plus z1 into a3, फिर इसको ऐड करूंगा, so what I would get is a1 plus a2z plus a3 z1 square. मैंने थोड़ा इसको इस फॉर्म में लिखा, अब फिर इसको z1 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, so you will get z1 into a1 plus a2, यहाँ पे z1 है, okay, a2 into z1 plus a3 into z1 square. मैं ये जनरल मेथड को थोड़ा करना चाहता हूँ. Then you add this, so you will get a0 plus a1z plus a2z1 square, यहाँ z1 है,
plus a3 z1 cube, which is nothing. It would always be p of z1, which is 0. So जो मेरा qz मिलेगा, यानी if I want to find pz divided by z minus 1, z minus z1, it should be here a3 into z square plus a2 plus z1 into a3 into z plus the constant term होगी अपनी a1 plus a2 z1 plus a3 z1 square. तो ये मेरा qz in terms of z1 and the coefficients of the original pz. अब इससे हम गेस कर सकते हैं, सपोज ये तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल था, अब अगर मेरे पास pz हो ऊपर जनरल पॉलिनोमियल, तो आई कैन गेस कि क्या आएगा. यानी अगर pz होता, गेस क्या मतलब, यू कैन जस्ट एक्सट्रापोलेट. So you have got a n z raised power n plus a n minus 1 into z raised by n minus 1 plus so on and so forth into a1z plus a naught. ठीक है. Now what would be अगर p of z1 0 है, what would be pz divided by z minus z? Can you guess? अब यहाँ पे आना चाहिए an, right? क्योंकि यहाँ a3 an की जगह है, और I should get here z raised power n minus 1, क्योंकि यहाँ n है, यहाँ 3 है या 2 है, right? Then how about this? This should be now a n minus 1, right? Plus z1 into a n multiplied by z raised power n minus 2. फिर इसी तरह से जाना चाहिए a n minus 2 plus z1, या चलो मैं लिखता हूँ a n minus 1 into z1 plus a n into z1 square into z raised power n minus 3 plus so on and so forth. इसी तरह जाते जाते I would get लास्ट वाली टर्म जो यहाँ थी वो क्या थी, look at this. So this should be a n, चलो यही सीधे ही लिखता हूँ, a1 plus a2 z1 plus so on and so forth, और लास्ट वाली टर्म होगी a n z1 raised to power n minus 1, ये हमारी कांस्टेंट टर्म. ओके, सो ये सेटल करने के बाद I can go back to where I was, यानी मैं इसमें यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा. इसी तरह से pz z minus z2 pz divided by z minus z. So I should get, जो न्यूटन था उसके हिसाब से I should get p, चलो मैं लिखता हूँ, pz divided by z minus 1 should be equal to, क्या था ये, काश मैं इसको शायद कॉपी कर सकते हैं. I hope, कैसे करते हैं इसको सेलेक्ट, I hope ये होता हो. Oh no, Control Z, कहाँ से होता हूँ, कॉपी कर सकते हैं, आई डाउट. चलो रहने दो, इससे बेटर है मैं वहीं देखूँ. ओके, लेकिन मुश्किल है इतना सारा लिखना. चलो फिर से, अरे नहीं, अरे मुझे ये चाहिए, कर सकते हैं. और इनकेस किसी को पता हो इसको कॉपी कैसे करते हैं. चलो ऐसे ही करते हैं, अब क्या कर सकते हैं. ओके, व्हाट वाज दैट, I have to do it again. an into z raised power n minus 1 plus, what was it, an minus, एक आदमी लिखूं तो फिर हो जाएगा, an minus 1 into z1 plus, क्या था ये, plus z1 into an whole divided by multiplied by z raised power n minus 2 plus so on and so forth. और लास्ट वाली टर्म क्या थी, लास्ट वाली टर्म थी, चलो इससे पार भी करते हैं an2, चलो ठीक है, लेट्स सी, फिर प्लस एक और लेते हैं.
an minus 2 into क्या z1 है यहाँ नहीं कुछ गलत किया मैंने I have a feeling मैंने यहाँ शायद z1 नहीं है right so it should be बड़ा गड़बड़ हो रहा है an minus 2 plus an minus 1 into z1 plus an into z1 square whole raised power whole multiplied by z raised power n minus 3 plus so on and so forth. I should have a constant term here. What was that? Okay, you go from a1 to an. So you have a1 plus a2 into z1 plus so on and so forth up to an into z1 raised to power n minus 1. But this is the constant term. और इससे पहले भी अगर मैं एक आध term ले लूँ, what should be that? It should be a2 plus a3 into z1 plus so on and so forth plus an minus 1. No, an ही आएगा. It would be z1 raised to power n minus 2 whole multiplied by z. So this is my polynomial. This is pz divided by z. And similarly, अगर मैं करूँ pz divided by z minus z2, what would be that? It would be an z raised power n minus 1. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ होगा an minus 1 plus z1 थोड़ा सा एक. लेकिन मुझे लगता है बेसिक आइडिया तुम समझ गए. अगर तुम घर पे भी इसके बाद एक कर सकते हो. हाँ यहाँ पे z2 आएगा सॉरी है ना an minus 2 plus an minus 1 into z2 plus an into z2 square whole into z raised power n minus 3. Then I have plus now plus so on and so forth a2 plus a3 into z2 plus so on and so forth plus an into z2 whole raised power n minus 2 into z plus of course a1 plus a2 z1 z2 plus so on and so forth into an z2 raised power n minus 1. ठीक है ना इसी तरह से so on and so forth pz divided by z raised power z minus n बराबर होगा an z raised power n minus 1 बिल्कुल सही then I have an minus 1 plus zn an multiplied by z raised power n minus 2 plus an minus 2 plus an minus 1 zn plus an zn square whole raised power multiplied by z raised power n minus 3 plus so on and so forth into a2 plus a3 into zn plus so on and so forth into an zn raised to power n minus 2 multiplied by z plus of course a1 plus a2 zn plus so on and so forth an zn whole raised to power n minus 1. So this is the whole thing. Now remember that we have to sum it, that it must be equal to p dash z. So if we add them, adding these inequalities, we will get जो भी है तुम्हारा ये p dash z should be equal to, अब add करो, it should be n times an into z raised power n minus plus, तो मैं इससे देखता हूँ जल्दी से. ओके तो क्या मिलेगा हमें? Then look at this. दूसरी टर्म को ध्यान से देखो. z raised power n minus 1 का पावर एक तो आएगा n times n minus 1, right? तो I should have n times, या पहले इसको करते हैं दूसरी बार. It is z1 into an, z2 into an, z3 into an है ना, up to zn into an. So it should be n times an minus 1 plus it should be an into summation zi, z1 z2 zn है ना, multiplied by z raised power n minus 2 plus. अब तीसरी टर्म को जरा पकड़ते हैं. तीसरी टर्म में है n minus 2 और फिर यहाँ पर भी है n minus 2, यहाँ पर भी n minus 2. So it should be n times an minus 2
right? Then the second one, it is an minus 1 into z1, again an minus 1 into z2, so it should be plus a sub n minus 1 into summation zi. अब हमारी दूसरी आएगी, देखो. Then I have तीसरा, you have got an, it should be plus an into summation zi square whole multiplied by z raised to power n minus 3. Right. इसी तरह से करते करते बड़ा लंबा चौड़ा है हमारा काम. ओके, लास्ट पे क्या आएगा? चलो सेकंड लास्ट को हम देखते हैं. सेकंड लास्ट होगा, you would be n times a2, I hope so, n times a2, then you have plus a3 into summation zi plus, इसी तरह से करते करते plus, then I should have a n into summation zi raised to power क्या है अपना n minus 2 whole multiplied by z. अब यहाँ पे थोड़ा जगह ही नहीं है. Then I should again have n times a1. चलो मैं यहाँ लिखता हूँ n times a1 plus then I have a2 into summation zi. अरे यार ये जरा हटा दो. summation. Okay, next पेज पे इतनी क्या परेशानी है. But I think you can do it yourself ना, जब हम वो करेंगे, तो तुम अगर खुद भी ये इवेलुएट कर सकते हो. लेकिन p डैश खुद, p डैश z खुद किसके बराबर है? p डैश z, यू नो p of z क्या था? p of z was a n z raised power n plus a sub n minus 1 z raised power n minus 1 plus so on and so forth a1 z plus a naught, right? So p dash z is also equal to n times a n z raised power n minus 1 plus n minus 1 into a sub n minus 1 into z raised power n minus 2 plus so on and so forth into a1, right? So वो हम लिखेंगे यहाँ पे p dash z would be n, right, z raised power n minus 1 plus n minus 1 into a sub n minus 1 into z raised power n minus 2 plus so on and so forth plus twice a2 into z plus a1. And of course this is also equal to जो हमारा पुराना expression है. So p dash z is also equal to जो मेरा अभी था, है ना, जो लंबा चौड़ा expression है, जो मैं फिर से नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है इसमें. p of z divided by, जब ना मैंने सारों को ऐड किया, so you equate. अब अगर इसका it is पिछले पेज में अगर मैं जाऊं, p dash z is also equal to this thing, so you equate the coefficients of the like powers. So if you do that, what will you get? Equating the coefficients, पहले वाला तो सेम है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ भी n a n है, वहां भी a n a है, z starting from z raised power n minus 1 2. So you will get n minus 1, उससे हमें मिलेगा into a sub n minus 1 is equal to, तो जो वहां मिला था हमें वो क्या था? Let me write it as, okay, it was summation zi into a n plus क्या था a n minus 1. ये था बिल्कुल सही. तो इससे हमें मिलेगा, इस इक्वेशन से, यहाँ है n minus 1 टाइम्स, यहाँ है n टाइम्स है, हाँ यहाँ पे n टाइम्स, तो सॉरी. तो इट मीन्स दैट a n minus 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस समेशन zi into a n is equal to 0. So needless to say, ये तो हमें पहले से ही पता है, पहले वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी ये पहली इक्वेशन हमें मिलेगी, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. दूसरे से हमें मिलेगी इसी तरह से n minus 2 into a n minus 2 is equal to, so that was, क्या मैंने लिखा था, it would be, हाँ एक और चीज करते हैं, let me write s1 for summation zi, s2 for summation zi square, and so on and so forth, sn for summation zi raised power n, just to make my, थोड़ा कम्बरसम है यहाँ बार बार लिखना. So this would give me, जो दूसरी वाली इक्वेशन से है,
मुझे मिलेगा S2 यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स इनटू an plus S1 into an minus 1 plus twice is equal to twice नहीं is equal to ठीक है twice an minus 2 twice है नहीं n times होना चाहिए n times होना चाहिए हाँ लेकिन जब इसको यहाँ लाएंगे तो n minus 2 ठीक है you will get twice an minus 2 plus S1 into an minus 1 plus S2 into an is equal to 0. अब जाहिर सी बात है यहाँ से हमें S1 मिलेगा यानी इसको मैं लिख सकता था an minus 1 plus S1 into an is equal to 0. I know the coefficients of my polynomial है ना तो इसको मैं दूसरी इक्वेशन मानता हूँ तो फिर of course when I know an minus 2 an minus 2 from this I can know S1 उसको यहाँ substitute करके I can find S2 and this goes on and on. Similarly I would get S3 into an plus S2 into an minus 1 plus S1 into an minus 2 plus 3 times an minus 3 is equal to 0. Call it 3 equation 3. अब अगर मैंने यहाँ से S1 इवेलुएट किया फिर उसकी मदद से यूजिंग द कोएफिशिएंट्स मैंने यहाँ से S2 मल्टीप्लाई S निकाला S1 S2 निकाला तो ऑफ कोर्स यहाँ से फिर मुझे S3 मिलेगा यानी सम ऑफ द क्यूब्स and I can go on and on. So in general I will get SR into an plus SR minus 1 into an minus 1 plus SR in R minus 2 into an minus 2 plus so on and so forth. Last में मुझे मिलेगा यहाँ R क्योंकि यहाँ S3 था तो यहाँ 3 था यहाँ SR तो it should be R into A sub n minus R would be 0 जिससे मुझे SR मिलेगा. Right? Now of course R is less than n क्योंकि यहाँ पे जो भी पावर्स थे वो हमारा जो पुराना एक्सप्रेशन है जहाँ से हम उसको निकाल रहे हैं जो हाईएस्ट पावर है वो है n-1 यहाँ था n-2 एंड ऑफ कोर्स यहाँ n-1 है ना इधर बैठा हो हाईएस्ट पावर जो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं वो है Sn-1 through this formula through these set of formulas of course now I can evaluate S1 S2 up to Sn-1 from these n equations. Okay, n-1 equations actually. So I can find these using this. The question is, can I find the next one? Can I find Sn plus 1, Sn plus 2? Actually, that is a little easier, in fact. Because अगर मेरा P of Z ये है, look at this. P of Z is an Z raised power n plus an minus 1 Z raised power n minus 1 plus so on and so forth. A1Z plus A0. I just multiply it by Z. So you get Z into P of Z is equal to an into Z raised power n plus 1 plus an minus 1 into Z raised power n plus so on and so forth A1Z square plus A0Z. And of course अगर मैं Z1 को substitute करूँ I would get Z1 into P of Z1 चूंकि ये 0 है इसका this should be 0 right so I would get this is 0 यानी an into Z1 raised to power n plus 1 plus an minus 1 into Z1 raised to power n plus A1 into Z1 square plus A0 into Z1 is 0. And same applies for all the other zeros. Now similarly I could have Z2. Similarly 0 would also be equal to an Z2 n plus 1 plus an minus 1 into Z2 raised to power n plus so on and so forth plus a1 Z2 ka square plus a0 into Z2 and for all the zeros and you can just go on and on then an Zn raised to power n plus 1 this is also equal to 0 plus a sub n minus 1 Zn whole raised to power n plus so on and so forth plus a1 Zn square plus a0 Zn ये भी 0 है right now then you just add them so you will basically get an into should I write
sigma Sn plus 1 बेसिकली होगा ना z1 raised power n plus 1 plus z2 raised power n plus 1 plus so on and so forth plus zn raised power n plus 1 plus similarly an minus 1 into z1 raised power n plus of course z2 raised power n जो भी है so it would be zn raised power n plus so on and so forth बाकी terms तुम खुद देख सकते हो this is equal to 0. Now from this I can easily get, and this is a situation like an into Sn plus 1, yani sum of n plus 1 to powers plus an minus 1 into Sn plus so on and so forth. Last pe hoga a0 into S1 is equal to 0. Now you know the coefficients again. जो previous equations में उसमें हम evaluate कर सकते थे, of course S1 evaluate कर सकते थे, S2 evaluate कर सकते थे, Sn evaluate कर सकते थे. गड़बड़ हो गई. हाँ उसमें Sn भी evaluate, उसमें Sn था, वो yes Sn भी था उसमें, सॉरी एक्चुअली है ना वो सारी इक्वेशंस मेरी नजरों में नहीं थी ना, वो पिछले पेज पे थी. इसमें Sn भी था क्योंकि you had Z1 Z2, इस फॉर्मूला के हिसाब से you should also have Z1 raised power n minus 1. इसमें था Sn, मतलब sum of nth powers of the roots था इधर. नहीं इसमें से तो नहीं, लेकिन इक्वेशंस में से हमें मिल जाता क्योंकि दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर, हमें ये मिलता है ये जनरल इक्वेशन r इज लेस देन इक्वल टू n के लिए, सॉरी तो यहाँ हमें Sn के लिए मिल जाता, मतलब ऑफ कोर्स नोट से बिल्कुल क्लियर है ये, उसमें कुछ नहीं. ओके सो n प्लस 1, अब अगर मुझे Sn पता है अप टू S1 और सारे कोएफिशिएंट्स पता है तो मुझे Sn प्लस 1 मिल जाएगा, राइट. और फिर ऑफ कोर्स इसी तरह से आई कैन जस्ट यहाँ पर अगर मुझे अब मुझे Sn प्लस 1 तो मिल गया ना मुझे. अब अगर मुझे चाहिए Sn प्लस 2, मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ z के बजाय z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना. इसी तरह से अगर मुझे चाहिए Sn प्लस 3, यहाँ z क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल गेट ऑल द पावर्स फ्रॉम दिस सेट ऑफ इक्वेशंस. थोड़ा सा कम्बरसम बट स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम, उतना ऐसा है कुछ नहीं बिल्कुल डिफिकल्ट है. ओके सो इन दिस वे वी कैन फाइंड S1 S2 अप टू जहां भी हम जाना चाहें, और बाय Sj I mean summation zi j raised to power j. I runs from 1 to n for a polynomial of degree n. Okay, इसमें अब एक आध मिनट रह गया है. By the way, S1 and sigma 1 is same. Huh? This is just summation, the first powers. So ये evaluate करना तो straightforward है. We don't need this. मतलब पहले से हमें इसका पता ही होता है. Because it is just minus n minus 1 divided by an. ओके तो मुझे आज थोड़ा काम भी है, वैसे एक आध मिनट रह गया है. अगर तुम में से कोई पूछना चाहे कोई क्वेश्चन किसी के रिगार्डिंग, हेलो कोई सुन रहा है कि मैं ऐसी हवा में बोल रहा हूँ? वैसे वो भी हो सकता है. कितने हैं यहाँ पे हमारे, शेयर बंद करता हूँ मैं. हाँ हाउ मेनी डू हैव, बस हो गया इसका टाइम, 40 मिनट हो रहे हैं. तो मुझे बताओ कुछ, हाँ इसका मुझे भेज देना कोई ना स्क्रीनशॉट फॉर अटेंडेंस, राइट. और कोई क्वेश्चन कुछ रिगार्डिंग दिस? जल्दी से. नो सर. नो सर. सो देन इट इज गुड सर, क्योंकि मुझे जाना है और लेस देन 1 मिनट है. हाँ मुझे ये स्क्रीनशॉट भेज देना. और 23 आए हो आज तुम फॉर अटेंडेंस सेक, नहीं